सभी को नमस्कार और थैंक यू सुनील जी, देवी प्रसाद जी फ्रॉम वधवानी फाउंडेशन फॉर सपोर्टिंग सीएससी इन दिस यूनिक इनिशिएटिव। हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपने जैसे एक्सप्लेन किया, हमारा पर्पस ही देश में शायद सोशल एंटरप्राइज बनाने का है और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने का है। एंड दैट इज द रीजन वी हैव मोर देन 500,000 ऑफ दीज पीपल। जैसा आपने कहा कि आपका फोकस भी विमेन है, तो हमारी इसमें से 100,000 विमेन हैं जो चलाती हैं, एंड एज यूजुअल दे आर वेरी गुड। अगर वो स्किल सेट ऑफ विमेन जैसे मल्टीटास्किंग एबिलिटी है, more credibility in the community, more sincerity. All these are built into women, and these 100,000 women do better than the men as an entrepreneur in our CSC ecosystem. तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे ये बच्चे बच्चियां जो देश में फॉर्चुनेटली दे आर इक्विटेबली स्प्रेड, सो दे आर ऑल ओवर द कंट्री। Geographically they are all over in every panchayat and every village, so they'll be able to learn. And you saw the examples of Dr. Vipin, Archana, and Umesh, and they're all are champion VLEs because they are also role models for others. They're a little smarter than compared to many others. They learn the skill better than many of these other people who are done it. Entrepreneurship, besides the other traits, see, we also tell them, हम भी यही बोलते हैं कि हमारा एक ही उद्देश्य है, आप सबको गुप्ता, अग्रवाल और बंसल बनाना, because this tribe of people who are inherently have the qualities of entrepreneurship is what we are codifying into a language and telling them this is what you need to do. And our experience shows that all other people, in fact, the topmost VLE in the country who does the topmost transaction has got 25 people employed, had a turnover of more than 8 crore. He's an Agarwal. And he himself is handicapped. So all those limitations, and there are one chap who has got Sanskrit studied. He's also a Jain. And similarly, our study shows that these people who are basic skills of entrepreneurship from the family tradition system do far better because their behavior patterns are different. And that is what we will probably have. हम यही कहते हैं सबको कि आपको वही बनाना है. Sardar ji, Gupta, Agarwal and Bansal is what we want to make each one of them so that they build a real good social enterprise. तो हमारे लिए बहुत अच्छा है आपका जो पूरा हमारे VLEs हैं उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है. दे आल्सो लर्न क्वाइट अ लॉट. अभी शायद हिंदी और इंग्लिश में है क्योंकि हम लोग तमिलनाडु और कर्नाटक में भी काम करते हैं. इफ यू कैन ऐड फ्यू लैंग्वेजेस तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है लैंग्वेज में, और लैंग्वेज में सीखने में बहुत मदद मिलती है. आर एक्सपीरियंस शोज के वो लैंग्वेज के तरीके से सीखने में बहुत मदद मिलती है. दो सेक्टर्स जो आपने बताए बिसाइड्स द एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स, जो रिटेल का है, हेल्थ का है, दे आर एमर्जिंग सेक्टर्स. और हम तो कोशिश करेंगे कि हमारे सारे VLE जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे, वो अपने इलाके में बच्चों को बुलाएं, मोबिलाइज करें और उनका अवेयरनेस क्रिएट करें और उनकी मदद करें उनको रिटेल और हेल्थ सेक्टर में ट्रेनिंग और स्किल प्रोवाइड करने के लिए. दे कैन रजिस्टर फॉर दीज कोर्सेज एंड डू दैट पार्ट ऑफ द, क्योंकि हमारे पास ग्रामीण नौकरी पोर्टल भी है. CSC रन से ग्रामीण नौकरी पोर्टल, एंड वी रजिस्टर दीज कैंडिडेट्स हु आर ट्रेन्ड एंड अवेलेबल, एंड वी कैन शेयर विद Vadani Foundation who can help us in placements of with other agencies who require them. Because not only we train them, skill them, we also create a platform for them, also for the other people to try and access. हमारे लिए सबसे बड़ी एडवांटेज ये होगी कि वधानी फाउंडेशन के ट्रेन्ड स्टूडेंट्स का रिकॉग्निशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा इंडस्ट्री में, एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स आसानी से मिलेंगी. तो हमारे गांव के बच्चे और बच्चियां जिनको नौकरी करने का ज़रूरत है या जो करना चाहते हैं, they'll be able to try and find out these opportunities for themselves. दूसरा हमारा एक मकसद जो हम बहुत पहले से स्किलिंग का कहते थे, हम थोड़ा स्किलिंग अलग तरीके से करना चाहते थे. हम चाहते थे कि स्किलिंग का जो है क्लासरूम मेथड नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में क्लासरूम में 10-15 बच्चों को स्किल सेट प्रोवाइड करने का हमारा मुश्किल है. बट आई कैन फाइंड वन इन ए सेंटर, but one in a center will have 100,000 people in 100,000 locations. That system nobody has. Fortunately, unfortunately, the government of India skilling system still focus on a classroom method. एक क्लासरूम होना चाहिए, CCTV होना चाहिए, 10-15 बच्चे होने चाहिए. हम उस सिस्टम में फिट नहीं करते हैं बिकॉज हमारा मॉडल ही अलग है. The whole focus is that anybody anywhere want to learn
he should be able to learn, irrespective, and especially these women who live in villages, they can't even travel to a location for giving an exam. So that is the reason why for first time in the country we built a remote proctoring examination system. और हम वहीं पर पढ़ाते हैं, वहीं पर सिखाते हैं, वहीं पर एग्जाम लेते हैं. Right. Which also safeguard the interests of all of them because this is far better than even a physical examination system. We realize the relevance of these in rural India, and that's what the whole journey for us and building the framework in that fashion. एक जो हम गांव में करना चाहते थे, गांव में ट्रेडिशनल स्किल सेट्स हैं, जैसे एक धोबी है, एक कुम्हार है, एक लोहार है, और इस तरह के 4-5 स्किल सेट्स गांव में होते थे ट्रेडिशनली. वी वांट टू कन्वर्ट दीज इनटू दी मॉडर्न स्किल सेट्स. एक मोबाइल का शॉप होगा, एक इलेक्ट्रिक का शॉप होगा, और एक एग्री इक्विपमेंट्स का शॉप होगा, एक जो अदर पार्ट ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर है उसकी रिक्वायरमेंट का एक शॉप होगा. So all those part which are traditional, which are new, so replacing the traditional skill set with each one. So अगर हम हर पंचायत में 5 लोगों को ये स्किल सेट चला लें, so the purpose of Gram Swaraj and Atmanirbhar Bharat will get served. The Atmanirbhar Bharat and of course an assistant mechanic, motor mechanic, क्योंकि आजकल गाड़ियां सबके पास हैं. Yes. We did some course on assistant motor mechanic, but I think with the association with Advani Foundation, it will be possible for us to fulfill this ambition of us to create these new 5 skill sets in every village. Find out people, either they're traditionally doing it or those who want to, from the tradition, want to come into a modern age of trying and doing the same business. वॉशरमैन को हम एक मशीन देके भी अच्छा सा बना सकते हैं. बार्बर को एक बार्बर की जगह हम दूसरा सेंटर बना सकते हैं, so that women and all that we can do that part of the work for them. So all this is today traditionally can be transformed, and we'll be able to find out people who are willing to do that part. अगर 2.5 लाख गांव में 5-5 लोगों को इस तरह के स्किल सेट में हम क्रिएट कर सकें, that will be a fantastic story. That will be a great story, and that will be the whole purpose of the government of India also, and also our purpose in trying getting skill sets in the country. एक हम लोग पता नहीं आपके पास है साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम. वी वांटेड टू क्रिएट 1 woman in every village. Sure. A cyber security champion. We of course wanted to call her a cyber security ambassador, where she will have because the women who are now using technology, they need support. They need actually support. Somebody hacking them, somebody getting problems, somebody bullying them through a cyber system. They will have to confidently come and speak to someone who can tell them what to do, where to go, where to the place to get help for, or if something can be done in that sense. Right. So 600,000 villages should have 600,000 women who will be actually enable and help the community in dealing with the cyber problems which are emerging. And the process of these hand-holding support and training can be on a regular process. Right. Initially, we skill them, certify them, and we also make them. And then we also create a business model for them that wherever they advise somebody, they can charge some money for that advice so that they will sustain for themselves. Then now sustainability also will come around. So if you have a program on cybersecurity, we'll be very happy to try and, or we can give a feedback to you, and you can design something where we can, along with Advani Foundation, create 1 woman in every village, a cybersecurity ambassador who will try and help people who use technology today, student, young, youth, old, everybody, so that they are safe, or if they have got into a problem, how to resolve the problem and try and support them. Yes. ये हमारा मकसद है. आप अगर मदद करेंगे, आपके पास बहुत सारे कोर्स हैं. Advani Foundation is known. Advani Foundation doesn't need an introduction. It's a very reputed organization, has very talented people and very skill set people, has done a lot of learning across the world and build these schemes and these programs. So we will be too happy to associate not only these retail and the healthcare part, but other programs of yours and launches across. But I say the purpose of those 5 skill set, modern skill sets in every village, every panchayat to begin with, can be a great story for us to create and do it, which also will serve your purpose of creating. Our focus largely is rural, and we focus on rural India. Urban, of course, we have like Dr. Vipin is from urban area, and they may be little urban focus, but our main focus still continues to be rural India, and we still want to create a necessary skill set using technology for rural youth and rural women in that sense. So we are thankful to all these
support which is provided by Padhani Foundation, especially to Sunil ji and Devi Prasad ji. We are grateful for your support, and we definitely need for support from you for in furtherance of the objective of trying creating a skillful new emerging workforce in the country, especially in rural India, meeting the requirements of the community.